बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। तो जी स्टार्ट करते हैं. Once again, I'm at SSC-II 10th biology. So my today's topic is once again from chapter number 12, coordination and control, and my today's topic is from endocrine gland system, and that is the extension, by the way, of my last lecture. But before starting the lecture, you have to answer me the following questions. तो जनाब पहले सवाल का जवाब दिया जाए. How would you identify a gland as endocrine gland? कैसे आप एक ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड आइडेंटिफाई करेंगे? क्या खासियत होगी, क्या निशानियां होंगी? ये आपने मुझे बताना है. Then what is a hormone? Hormone को कैसे define करेंगे आप? And then what are the conditions necessary for the following diseases? So diseases are dwarfism and acromegaly. And now you need to tell me that what are the conditions necessary? Means what are the specific, physical changes or the genetic changes? What do you think? How would you identify the patient with dwarfism and acromegaly? And what are the possible reasons behind? You need to tell me in this question. And then where pituitary is located. And by the way, this is the question is the location means there pituitary is present in which part of our body, or you have to tell me where it is located in our body. So the answers for answer, if you can answer me in the comment, I will be delightful. And if you have found any difficulty in answering them, so please comment me, and you can contact me at any time by asking any question. Okay, so let's start with today's lecture, and that is pituitary gland, the master gland. आपको पता है ये मास्टर है आपका, ये मतलब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का मास्टर है, जिस तरह मैं भी एक मास्टर नहीं हूँ. आगे चलते हैं. तो जी pituitary gland is going to, so दोबारा से थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ. Pituitary gland, it is located in the brain, right? Pituitary gland is located in brain, right beneath the, the hypothalamus. Hypothalamus has a very deep relationship with the pituitary because, as you know, hypothalamus is going to control our endocrine gland system, and pituitary is our master gland. So look at this diagram. Once again, I'm telling you that it has, although it has three lobes, but in our book only two lobes. They have discussed only two lobes. One of them is interior, the other one is the posterior one. So interior lobe, we already have completed with the interior one, and now I am discussing the posterior lobe. Or posterior lobe, जनाब यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा है, are going to produce two different hormones. By the way, it is not produced, it is released by posterior lobe. Okay, now look at this. These are the hypothalamo hypophyseal tract, right? So आपके लिए ये जरूरी नहीं है स्नायु को छोड़ें आप, but the important thing is these are the nerves or the neurons coming from the hypothalamus. Means these are the neurons of hypothalamus. These neurons, by the way, are responsible for the production, okay, for the production of oxytocin and ADH, the two hormones which are released by posterior lobe, right? Production is not made by the posterior lobe, it is produced by hypothalamus. ये बात याद रखनी है. I will ask you again later in the lecture. Okay. And then pituitary gland, posterior lobe. Pituitary gland का हम posterior lobe discuss करने लगे हैं. And posterior lobe is going to produce two hormones. I already have discussed the names, oxytocin and vasopressin. And vasopressin is also called as ADH. ADH शायद सुना हो जब आपने किडनीज वाला टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने तब भी बताया था, मतलब मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन जब मैं अपनी क्लास को पढ़ाती हूँ तो बता देती हूँ कि ADH is responsible for the maintaining the water and salt balance in our body. So oxytocin and vasopressin, these two hormones are are released by the posterior lobe. So the posterior lobe of pituitary. Now the posterior lobe of pituitary gland stores and secretes two hormones. देखो ये लिखा हुआ है सर, स्टोर करता है और secrete कर देता है, प्रोड्यूस नहीं करता. ये याद रखना ये बात, ठीक है? So who is going to tell me which part of the brain is responsible for the production of the hormones produced by the pituitary? Posterior lobe, sorry. So hypothalamus. Well done. So hypothalamus is going to produce the two hormones, oxytocin and vasopressin, which is also called as antidiuretic hormone, ADH. Okay. These hormones are produced by hypothalamus, a part of brain. ठीक हो गया. Now the posterior gland, posterior lobe में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे vasopressin, the ADH.
एडीएच, अब ये जरा भैया जरा ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट मैप है। आपने क्या करना है कि आपने हर हार्मोन बल्कि हर टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट मैप बना लिया करो। दिस वुड इजी टू रिवाइज, टू रिकॉल द थिंग्स, टू रिपीट द थिंग्स, बड़ा आसान हो जाता है याद करना समझना। सो कॉन्सेप्ट मैप आई एम गिविंग यू फॉर द वेसोप्रेसिन और एडीएच, राइट। सबसे पहले मैंने हाइपोथैलेमस लिख दिया है। हाइपोथैलेमस है मतलब ब्रेन से रिलेटेड मामला चूंकि है ना, इसलिए। सो हाई ब्लड वॉल्यूम, अगर आपने बहुत सा पानी पिया हुआ है, मीन्स इफ यू हैव अ वेरी हाई ब्लड वॉल्यूम, मीन्स देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी फ्लूइड्स like blood, like tissue fluid, so lymph. So if in all these the bodily fluids have higher volume of water, then in that case we are going to produce dilute urine. ठीक हो गया ना, ये बात तो सबको मालूम है। अगर ज्यादा है तो वी विल प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। आपने नोटिस किया ना, जब आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको ज्यादा दफा वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है, और हम व्हाइट कलर का यूरिन पास करते हैं, ठीक है। सो डाइल्यूट यूरिन पास कर दिया हमने। एंड व्हाट अबाउट इन लो ब्लड वॉल्यूम? समर्स में ऐसा होता है कि हम गर्मी में हैं और बहुत यानी कि एक घंटा 2 घंटा हम पानी नहीं पी सके, तो हमें हमारे ब्लड में वॉल्यूम लो हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेस्पायरेशन भी हो रही है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है, तो हाइपोथैलेमस की तरफ अब जाना पड़ेगा मैसेज लेकर। So in case of low blood volumes, your body will send message to hypothalamus. Means आपका blood volume low is itself a message to the brain. जब वही blood brain में से गुजरेगा तो obviously hypothalamus will get that there is a low amount of water in the blood. So then what it will do, it will produce ADH. ये क्या करेगा? ये ADH प्रोड्यूस कर देगा, ये एडीएस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही लो ब्लड वॉल्यूम हो गया, ब्लड में, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में, एवरी बॉडीली फ्लूइड हैव अ वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर, इन दैट केस आवर हाइपोथैलेमस विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एडीएच। जैसे ही प्रोड्यूस किया एडीएच तो इसने क्या हुआ, इसने स्टोर कर दिया, प्रोड्यूस करने के बाद रिलीज कर दिया इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। स्टोर्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डाल दिया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एडीएच को फिर फाइनली रिलीज कर दिया इन द ब्लड, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर दिया। यानी कि आपने नोटिस किया, जब हमने थोड़ा पानी पिया हुआ होता है तो हमें एक तो यूरिन पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर हम करते भी हैं तो बहुत, जैसे रमज़ान में रोज़ा रख लेते हैं हम, तो गर्मियों में रोज़े आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो फिर हमने नोटिस करते हैं कि हम बहुत कम दफ़ा वॉशरूम की हमें ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम जाएं भी तो बहुत स्केंटी अमाउंट एंड डार्क येलो पेल कलर का यूरिन हम पास करते हैं। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, it has more urea and salts as compared to water, while dilute urine have more water in it, while concentrated urine has less water in it. और ADH कब रिलीज होगा? when blood volume has when blood has low volumes, right, low water amount in our blood. In that case ADH will release only in the situation when there is low blood वॉल्यूम्स, राइट। याद रखना ये कॉन्सेप्ट मैप है, तो अगर इतना बना लोगे तो याद करना भी आसान होगा और रिवाइज करना भी आसान होगा। ओके, देन वेसोप्रेसिन एडीएच। वेसोप्रेसिन की बातें बता चुकी हूँ, मगर यहाँ दोबारा देख लेते हैं कि आपकी बुक का टेक्स्ट है। Now, vasopressin increases the rate of reabsorption of water from nephrons. Obviously, पानी के जाने का रास्ता तो nephrons ही है ना. So this ADH will send message to the nephrons to pick up all drops of water, right? To pick up all amount of the water. When we have low amount of water in body fluids, pituitary glands secrete vasopressin, and also more reabsorption of water occurs from nephrons into the blood. Nephrons से उठा के blood में डाल देते हैं. In this way, body retains water and less amount of urine is produced. ये सारी कहानी मैंने आपको पीछे तस्वीर में दिखाई. Now, on the other hand, when body fluids have more than normal water, there is a decline in the secretion of this hormone. Means there is no need of producing ADH in case of having uh, uh, larger amount of water in our body. Now, then is abnormal secretions of vasopressin, यानी कि abnormal secretion भी तो है ना, या ज़्यादा या कम. अच्छा, अब आप ये सोचो कि अगर आपकी बॉडी में लो अमाउंट है और नहीं आ रहा वेसोप्रेसिन, फिर क्या होगा? फिर अगर हमारी बॉडी में लो अमाउंट है वाटर की और हम फिर भी एडीएच नहीं आ रहा, तो उस केस में भी फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना. हम डाइल्यूट यूरिन ही पास करते रहेंगे, बिकॉज दिस इज द ड्यूटी ऑफ एडीएच, which is going to produce a dilute urine, concentrated urine, with no other means are there for the production of concentrated urine. This is the duty of ADH. अगर आपका नहीं ADH नहीं प्रोड्यूस हो रहा, so in that case आप एक
किसी को भी एक डिजीज है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस, एंड दैट डायबिटीज इंसिपिडस व्हाट इट विल डू, व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर दिस डिजीज इज अ वेरी एक्सट्रीम थर्स्ट। वो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और आप बार बार वॉशरूम जाओगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डायबिटीज, एंड in this case the main symptom is high extreme thirst and excessive urination। तो आप बार बार वॉशरूम जाते हो, और अगर नॉर्मल भी अगर आप देखो एडीएच ना हो तो हम तो वॉशरूम से आए ही ना। ये वॉशरूम, ये एडीएच ही हमें हेल्प कर रहा है कि हमारे अब थोड़ी देर के लिए यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है, या उसको हमें ऐसा थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हम बार बार रिलीज करने के लिए वॉशरूम ना जाएं, ठीक है ना। सो if pituitary gland does not secrete this hormone in the required amount, less water is reabsorbed from nephron and there is excessive loss of water through urine. So this condition is known as diabetes insipidus. So that is what abnormal secretions of vasopressin. सो इन ये मैंने दोबारा उसी में आपको एडिट किया थोड़ा सा। सो अब यहाँ से देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नो एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नो एडीएच, एडीएच नहीं रिलीज हो रहा, इन दैट केस डायरियोट्यूरन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट डिजीज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ये वही सेम कॉन्सेप्ट में पे, मगर यहाँ पे थोड़ा सा एंड पे मैंने चेंज किया। Now, the other hormone of pituitary gland, posterior lobe, is oxytocin, and oxytocin is basically a hormone most prominently produced in female's body. And the hormone oxytocin stimulates the contraction of the uterus walls in mothers for childbirth. So, वो जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करना इज द ड्यूटी ऑफ द ऑक्सीटोसिन। मोर ओवर दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क, not milk production. It is responsible for the ejection of milk from the mother's body. So this is important hormone at the time of the childbirth and the ejection of milk. So this hormone is most prominently present in the females. So at the time of very specific task, आपको पता है, आप समझ रहे हैं, थोड़े परेशान भी हो रहे हैं, मगर रिलैक्स हो जाएं। So this is a hormone which is going to help this situation very because this is the duty of that body। तो करना है, अल्लाह ताला का रूल है, नेचर है, अल्लाह ने ऐसा बनाया है इंसान को कि इंसान को उसकी चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस उसकी लाइफ में रखा है। तो जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हॉर्मोन्स भी दिए हैं, बॉडी को इतना रेडी भी किया है। सो दीज आर द कंडीशंस through in which oxytocin is going to produce in our body. So that is the end of my today's topic. And any question, if you have any question, you can ask me and you can write me in the comments. All the best from my side. Please apna bahut zyada ख्याल rakhein. We will meet again in the next lecture. Allah Hafiz.